Hello student, good morning. Student, in our previous class, we have studied about the combustion. We have also learned the factor which affect the combustion, in which we have studied that the air or oxygen is needed for the combustion. For this, we can understand and we can observe another simple example in our daily routine. First, for example, if a burning wood is covered with the glass tumbler, it will be stopped after some time. Why? Because if we cover the burning wood with the glass tumbler, the supply of the oxygen will be stopped. So it will be also stop burn. And another example, if the clothes of any person catch the fire, then he or she is covered with the blanket. Why? Because blanket stop the supply of the oxygen or the air. So student, we can understand properly by another example that the oxygen is needed for the combustion. Now student, our next topic is the ignition temperature. Ignition temperature. To understand the ignition temperature, we will talk some example. First, does a matchstick burn by itself? क्या कोई मैच स्टिक वो अपने आप जलती है? And if we carry or bring a burning matchstick near the paper, does the paper start to burn? क्या यदि हम किसी पेपर के पास में बर्निंग मैच स्टिक को लाते हैं तो क्या पेपर जलना स्टार्ट होता है? And another example may be if we carry or bring the burning matchstick near the wood, does the wood start to burn? And the another example may be, why do we need the paper or the kerosene to burn the wood or the coal? वुड और कोल को जलाने के लिए हमें पेपर या केरोसिन की जरूरत क्यों पड़ती है? So student, these are example, very simple example which we can observe in our daily life. These example depend on the ignition temperature. To understand these example and the reason behind these example, we have to understand about the ignition temperature. So student, how can we define the ignition temperature? Ignition temperature is actually the lowest temperature. Ignition temperature is the lowest temperature on which any substance catch fire or start to burn. इग्निशन टेम्परेचर है वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस पर कि कोई सब्सटेंस है वो कैच फायर, आग पकड़ता है या फिर जलना स्टार्ट होता है. Student, any combustible substance cannot catch fire below its ignition temperature. कोई भी combustible substance है, combustible substance means जिसका की combustion हो सकता है, तो कोई भी combustible substance है उसका combustion है वो उसके ignition temperature से नीचे टेम्परेचर पर combustion नहीं हो सकता है. And this we can understand by the very simple example. If we provide the some or if we heat the some quantity of kerosene or the wood, यदि हम
थोड़ी सी क्वांटिटी केरोसिन या वुड की लेते हैं, या piece of wood, if we take the piece of wood and some quantity of the kerosene, if we heat them, then we will observe here the kerosene will start to burn, but the wood still not start to burn. केरोसिन है वो थोड़ी सी हीट में जलना शुरू हो जाता है, परंतु वुड है उसके साथ में ऐसा नहीं होता है. So by this we can observe here, we can understand here that the kerosene has the low ignition temperature. Kerosene has the low ignition temperature than wood. केरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड से कम होने के कारण वो थोड़ी सी ही हीट में जलना शुरू हो जाता है. सो स्टूडेंट, इट इज एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न इट. किसी भी सब्सटेंस का जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी होता है. एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट with a very simple activity. You are observing here the diagram on this board. In this activity we will prepare the two paper cup. पेपर की हेल्प से हम इस प्रकार से दो कॉन या कप बनाते हैं. And in the first cup we will take the some quantity of the water and we will start to heat it with the help of candle. And in another cup we don't use the water and start to heat it with the candle. In which cup there is the water and water start to heat here. Student, you will observe here in this first activity, in the first cup you will observe here that the paper don't start to burn. Why? Because the heat given to the cup is transferred to the water in the form of the conduction. जो हीट कैंडल की हेल्प से इसको दी जा रही है, वो जो हीट है वो वाटर लेता है और ये ट्रांसफर हो जाती है हीट वाटर को कंडक्शन के फॉर्म में. So this paper cannot reach its ignition temperature. और इस वजह से जो हीट है वो तो ट्रांसफर हो जाती है डायरेक्ट वाटर हो कंडक्शन में, परंतु जो पेपर है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता है. इस वजह से जो पेपर है यहाँ पर जलता नहीं है. एंड वाटर में बी स्टार्ट टू बॉइल, यहाँ तक कि वाटर है वो बॉइल होना शुरू हो जाता है. एंड इन दिस अनदर देयर इज नो वाटर. सो इफ वी प्रोवाइड द हीट विद द हेल्प ऑफ कैंडल, दिस cup will be start to burn, because in the absence of the water this paper will reach at its ignition temperature. So student, today we have studied about the ignition temperature. You have write the definition of ignition temperature in your fair notebook and learn it. Thank you.